गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। सत श्री अकाल, प्रणाम एंड जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट इकोनॉमी इन चाइना। व्हाई? बिकॉज Xi Jinping is trying to control the private sector in the public manner. Now, all this has a background, right? And let me go into the background a bit and then I'll take you forward. Uh, First, just about 4 days back, मैंने एक वीडियो जारी किया था where I spoke about how China is eyeing India and its economic situation is going from bad to worse. ये जो पूरा that episode was based on this article where the South China Morning Post had said recovery is going from bad to worse. And of course, I discussed more than 6 takeaways. बहुत चीजों के बारे में उस व्याख्या में बात किया था। कल एक मेरे को इन रिप्लाई आई गॉट दिस फीडबैक। ये फीडबैक मेरे को जर्मनी से मिला और उन्होंने क्या बोला, रेस्पेक्टेड जनरल साहब, आई लिव इन जर्मनी एंड आई कैन एश्योर यू दैट EU इज करंटली इन अ डिफ्लेशनरी मोड। ये तो सबको पता है। सेम शैल हैपन इन USA। थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट आई विल टेक इट एट दैट। वेस्टर्न वर्ल्ड हैज नो डिमांड फॉर चाइना इंपोर्ट्स, वो जाहिर हो रहा है। अफ्रीका इज ऑल्सो फीबल, उनके वैसे कर्ज में डूबे हुए हैं। एशियन रीजन कैन नॉट रिप्लेस a drop of exports to Western countries. They cannot replace whatever the Western offtake was. Hence, your assumption is bang on. China is in big trouble and India should now be on the guard. China is in big trouble and India should now be on the guard. These are the two operative things. तो आज हम ये जो चाइना इज इन बिग ट्रबल के बारे में बात करेंगे। India should now be on the guard in my next episode, but I will come back in the next 2-3 days. Okay. Now, what happened? ये जब हुआ था, इनका economic results आए थे, the whole thing was in a bad shape. Immediately, China, the next day, they came out with the action plan, and that action plan had 31 points. So the headline said, "Can China's new action plan lift economy out of deep-rooted malaise and bring market peace of mind?" So they brought out 31 points and they want to encourage the private sector. Private sector को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि private sector जो है चाइना के अंदर वो 70 से 80% ऑक्यूपाई करता था। और इस आर्टिकल में मुख्य रूप से इन्होंने ये बताया कि बीजिंग unveils 31-point plan. The nation's second quarter GDP grew by just 0.8% compared to the first quarter. The outcome has fanned fears that the national economy has been losing steam. It's slowing down. इसमें दो राय नहीं है। And जैसे मैंने पहले बताया, I think they've poodle fake the figures. Even this. Okay, notwithstanding that, they came up with the second article. They came out with this article. China vows to include outstanding people from private sector in politics at all level as economy falters. अभी प्राइवेट सेक्टर से वो पॉलिटिक्स में सबको लाना चाहते हैं कि ये एक अनोखा चीज है। इसीलिए मैंने बोला पब्लिक कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। स्टेट कंट्रोल करेगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को जो प्रतिनिधि है वो पॉलिटिक्स में लेके आएंगे और उसके भी कुछ दिक्कत है। और इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है, ये थोड़ा नजदीक से पढ़ते हैं। पिछले 10-15 महीने से पब्लिक ओपिनियन ऑन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैव लेड टू देयर लैक ऑफ फेथ इन जॉइनिंग द पार्टी एंड पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स। ये प्राइवेट वाले आएंगे नहीं। अभी आप बोलो आ जाएगा, कौन आएगा? There have been calls to eliminate private ownership, led by conservative online opinion leaders. In recent years, have fueled a wave of attack on entrepreneurs in our social networks, with users, especially young people, believing that capital is evil.
This has affected high-profile entrepreneurs, including Lenovo founder, and raised concerns from the private sector. इनको गाली दिया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि आप लोग देश को लूट रहे हो, ये प्राइवेट ओनरशिप बंद करो, ये चोर हैं सब। और कौन है ये सब? कम्युनिस्ट काडर के बंदे हैं। ये इनको बताया गया है कि इनको नीचे दिखाओ। इससे क्या है कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। सो द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हैज आल्सो बीन फ्यूल्ड बाय द टॉप लीडरशिप repeated references to preventing the disorderly expansion of capital and massive fines imposed on several internet company. इसका मतलब यह है कि ये जितने इंटरनेट कंपनी थे इनके ऊपर फाइन लग गए और इनको बताया गया कि भाई आप कंट्रोल में आ जाओ क्योंकि आप नंबर 2 के काम कर रहे हो। इनके ऊपर शक था, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ब्रेक ऑफ हो गया। Other articles in the action plan say the party will continue to attract members from the private sector and carry out ideological and political education. कि अभी जो भी प्राइवेट सेक्टर से पार्टी में आएगा, पहले उसको ये नहीं बताया जाएगा कि आप पैसा बनाओ ना, पहले तो आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एजुकेशन किया जाएगा, उसको कम्युनिस्ट बनाया जाएगा। जब उसको बोलेंगे भाई पैसा बनाओ, जब पैसा बनाओगे तो ये पार्टी में देना, तो कौन करेगा? Right? Last May, it also called for strengthening the party's leadership related to all processes in the private sector. कि हर एक चीज जो प्राइवेट सेक्टर करेगा वो पार्टी कंट्रोल करेगा इस आर्टिकल के मुताबिक। ये है इनका प्राइवेटाइजेशन। अगर चाइना बोलता है चाइना vows to include outstanding people from private sector in politics at all levels as economy falters, ये चुन चुन के प्राइवेट सेक्टर से लेंगे, उनको पहले आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में लाएंगे, उनको पॉलिटिक्स में बताएंगे, उनको यकीन करेंगे वो कट्टर कम्युनिस्ट हैं, फिर इनको पॉलिटिक्स में लाएंगे ताकि वो जितना पैसा कमा सकते हैं वो पार्टी के अंदर जाए और ये पार्टी पैसा बनाए। ये है इनका आइडिया बेसिक, यही होगा। फिर इनका इकोनॉमी कहाँ जाएगा? एक तो इनका प्लान है, ये प्लान को साकार करने के लिए कौन है? That's important. Who are the architects of this plan and who will execute it? Let me see the main players whom I know, whom I have analyzed. First take is Li Qiang. Li Qiang is the premier of China. He replaced Li Keqiang. Okay. He's now 6 months into his tenure. So June ho gaya, he was appointed in October. 9 mahine ho gaye. He actually took over reins in March. He's supposed to be very pragmatic and private friendly. In the World Economic Forum, he plays up China's economic prospects, hits out at the West over de-risking calls. इसने बोला कि चाइना अच्छा कर रहा है इकोनॉमिकली और de-risking नहीं होगा, decoupling नहीं होगा, friendshoring नहीं होगा। पर इसमें इसने 4 पॉइंट बताए। क्या है ये पॉइंट? आप जरा गौर से देखेंगे। 1 जून या 1 जुलाई या 2 जुलाई को हुआ, यानी कि 1 महीना पहले इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसने बोला। इसने क्या बोला? इसने बोला कि चाइना is expecting a stronger GDP in the second quarter than its first, which was 4.5%. China's GDP target for the year is 5%. वो तो टप हो गया। He said that calls from the West to de-risk are a false proposition. कि ये ठीक नहीं है, de-risk वगैरह नहीं करना चाहिए। उसके बाद इमीडिएटली फॉरेन जर्मनी का जो स्ट्रेटजी है वो de-risking के ऊपर है, बिल्कुल उल्टा। Lee said enterprises should make decisions for themselves at a time of economic challenge and that the government should not stand in the way by politicizing problems. और इसने ये भी बोला कि China's economic recovery is on the track. He said so. कि भाई सब कुछ ठीक है, अर्थव्यवस्था हमारा आगे बढ़ रहा है। And Beijing looks to deliver on its economic targets for the year. China will also continue to be committed to a more open market economy while boosting domestic demand for economic growth. ये है इनके प्राइम मिनिस्टर के 1 महीने पहले। खैर तब तक तो इसको पता चल गया होगा कि
इकोनॉमी का क्या हालत है, क्या होने वाला है, और उसके बाद इसने ये व्याख्या दिया है. ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल he was absolutely out of context with what's happened, और whatever he has said उसका उल्टा परिणाम हुआ है. ये रिजल्ट्स जो आए हैं, इसीलिए दे हैव गॉन इनटू पैनिक मोड एंड नाउ दे आर टॉकिंग ऑफ 31 स्टेप्स एंड गेट द प्राइवेट इंडस्ट्री, ये वो ऑल दैट. इसका काबिलियत क्या है? पहले तो इसको पता नहीं है इकोनॉमी क्या हो रहा है. प्रीमियर, unlike Li Keqiang, he knew exactly what was there in the economy. At his last speech, he said, he warned everyone then, take care of the economy, it's going to trouble you. This fellow doesn't seem to know anything. Okay, ये तो ठीक है, इसका एंटीसीडेंट्स भी देखते हैं. He was the in charge of Shanghai. He was the party chief in Shanghai when the Shanghai lockdown took place. And he declared victory in COVID's battle as city records 0 cases at start of major political meeting. ये जी जिनपिंग का चेला है. पहले हार जाओ, उसके बाद विक्ट्री डिक्लेयर कर दो. बट मेन थिंग क्या है कि इसने इतना बुरी तरीके से हैंडल किया शंघाई लॉकडाउन को. Everyone was against him in the entire Communist Party. That's what it says in this article. But the handling of the outbreak has cast a cloud over the political future of Lee. This was said last year, who had served under Xi when the future leader held the top provincial job in Zhejiang and was considered his close ally. Everyone expected him to be sacked, but he was not sacked. Xi made him a premier. Why was everyone expected him to sack? Because of his incompetence. So he was incompetent in Shanghai. He's incompetent now as a premier. Because he doesn't know what's happening. So he is there only because of his loyalty. Okay, let's see the second guy. We'll talk of Kinjan. Now, this man has been missing for the past 2 weeks. We don't know where he is. He's a foreign minister. What's his antecedent? He was the original wolf warrior diplomat. ये वुल्फ वॉरियर था, बिल्कुल ली के चहेता, सॉरी बिल्कुल जी जिनपिंग के चहेता. और जी जिनपिंग ने इसको चुन के भेजा यूएस से एज एम्बेसडर, और वहां जो एम्बेसडर था उसको वापस बुलाया गया. दैट एम्बेसडर Zhu Tunkai, he had a very good reputation in China and USA. He did a lot of things in USA for China where USA people recognized. He was there for 1.5 years. At the end of the tenure, when he was coming back, all media in USA said it was a listless man who was going back. He achieved nothing for China. He went out of his way not to be a wolf warrior. He did nothing. He's come back, he's done nothing, and now he's disappeared. Whether he's under purge or not, we don't know. He was selected only for his loyalty to Xi Jinping. So you're looking at the finance minister, the premier, to be absolutely SAE, just loyalty. And you extend this logic, and it was well known at the end of the 20 party Congress that Xi Jinping has packed the Politburo or the standing committee of the Politburo with only loyalists. Merit didn't matter. There was a time when merit mattered, it didn't matter. Now let's look at Xi Jinping himself, which I have put in a video earlier. पहले भी मैंने इसके बारे में बात किया, दोबारा बात करूंगा. Xi Jinping, all the while, throughout his tenure, has been split between political control and free market economy. As a result, he spoiled the economy completely. His main interest is to be bigger than Mao and Xi Jinping. ये मैंने इकोनॉमी के बारे में एक बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बनाया था, जो कल ही मैंने दोबारा उसको एडिट करके दोबारा चलाया. शायद अगर आपने देख लिया होगा तो ये नजारा उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है. और आजकल Xi Jinping, if you analyze, he is more interested in diplomacy
टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, उसका फोकस यहाँ है। ये पिछले 6-7 महीने में ये जितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर उसने नजरअंदाज कर दिया। चाहे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर, जॉब्स, कंजम्पशन, फूड इनसिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ये सब टप है। इसीलिए तो इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, अनएम्प्लॉयमेंट में है, एक्सपोर्ट टप है पूरे। अब अचानक बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को लेके आएंगे। और तो और डेमोग्राफी और क्लाइमेट चेंज भी है, उसके बारे में कुछ नहीं है, ना कुछ हो रहा है। इसका व्हाई हैज दिस हैपेंड? आई मीन वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस। अगर अगर हम समझेंगे नहीं कि ये चाइना में क्यों हो रहा है, वी विल ऑल थिंक ये भाई इसने तो रिपेयर शुरू कर दिया, 31 स्टेप्स ही विल टेक एंड इकोनॉमी विल बी बैक ऑन ट्रैक। इट विल नॉट बी बैक ऑन ट्रैक। It will not be back on track because of Xi Jinping and his leadership, which is only loyalists who don't have the pulse on the economy or on running the government. None of these chaps have had, uh, experience in running the government. A month and a half back, Amrita Hasija came and we discussed on the 20th Party Congress and the new cabinet. And she made a point of saying, all these people are inexperienced, they only have loyalty. It's showing. Okay, what about Xi Jinping himself? Xi Jinping has been doing a zigzag. And you'll agree with me that anyone, in any system, you take a child. अगर आपके बच्चे को एक और बोल दोगे कि पहले 5 साल आप क्रिकेटर बनो, जब कुछ दिन हो जाएगा आप उसको बोलोगे नहीं नहीं यार आप साइंटिस्ट बनो, उसको वापस करो और अगले 5 साल उसको साइंटिस्ट बनाने के चक्कर में पढ़ाओ। उसको बोलो 5 साल के बाद नहीं नहीं आप साइंटिस्ट नहीं बनोगे, आप मीडिया वाला बनोगे, उसको मीडिया क्लास में डाल दो, तो वो क्या पागल हो जाएगा? Xi Jinping is doing the same thing for the Chinese economy, right? Now, as far as he is concerned, टू एस्टेब्लिशेस एंड टू सेफगार्ड्स। उसमें टू एस्टेब्लिशेस में कौन है? एक कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा वो सेफगार्ड ऑफ Xi Jinping and the Communist Party. So he is the core of the Communist Party. He has to be safeguarded. In the first 3, 4, 5 years of his जो उसने chairmanship, इसने Xi thought out किया, BRI जो लॉस मेकिंग हो गया अभी उसको आउट किया और स्टेट कंट्रोल वापस कर दिया। जो प्राइवेट इकोनॉमी अच्छा कर रहा था, अच्छा भला 10% के आसपास इसका जीडीपी ग्रोथ होता था, उसको स्टेट कंट्रोल करके डाउन कर दिया। मार्क्सिज्म को लागू करके, कम्युनिस्ट कंट्रोल करके उसको डाउन कर दिया, एक दिशा में ले गया। जब ये कोविड आया था, इसने जीरो कोविड, कॉमन प्रॉस्पेरिटी, ड्यूअल सर्कुलेशन वगैरह शुरू करके पूरा इकोनॉमी को दोबारा नष्ट कर दिया, चलने नहीं दिया। कॉमन प्रॉस्पेरिटी से सारे प्राइवेट वाले डर गए। उन्होंने सोचा कि भाई इफ आई मेक मनी आई विल गो टू समवन एल्स, व्हाई शुड आई मेक मनी? देन ही टुक अ क्रैकडाउन ऑन एजुकेशनल टेक, बिग टेक, रियल एस्टेट। नाउ एजुकेशनल टेक एंड बिग टेक वर नियरली $2 trillion लॉस। एवरीवन न्यू। जैक मा को उठा के आउट, चलो भाई तू कुछ और कर। वो बेचारा कहीं वो टीचर बन के घूम रहा है। इसी तरीके से बाकियों को भी। रियल एस्टेट को इसने पाबंदी लगाया। वो ऐसे भी रियल एस्टेट वाज इन अ प्रॉब्लम इन चाइना। व्हाट ही डिड, he didn't allow capital to flow in the real estate. As a result, they went fought. And that stories were too well known. I've done a complete episode on real estate. Banking is in a mess. Mortgage strikes, strikes against Henan, major strikes. Now he is, so that was the second flip. Now the third flip hai. I called it the backward leap, the great backward leap. Now he is on security. He has spoken so much of security, हर जगह security, security, security. तो security के ऊपर जहां ध्यान है, तो आप कैसे प्राइवेट इकोनॉमी को आगे बढ़ने दोगे?
ये सिक्योरिटी क्यों है, 2 दिन में, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा आपको। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम यह है कि आप टेक्नोलॉजी में जितना भी पैसा डाल दो, आपको ये नहीं पता कि कब पैसा वापस आने वाला है। सब बोल रहे थे कि एआई के जरिए बहुत पैसा बनेगा। एआई के जरिए अमेरिका में बन रहा है, चाइना में नहीं बन रहा है पैसा। ओके, इसने पहले शुरू किया था कहानी कि चाइना कैन डबल इट्स इकोनॉमी इन बाय 2035। आजकल वो बोलना बंद कर दिया। आजकल ये क्या बोल रहा है कि एक्सपेक्ट ब्लैक स्वान एंड ग्रे राइनो इवेंट्स। अभी पिछले महीने भी कहीं बोला इसने ऐसे। इसका जो साइनेसेंट्रिक ऑर्डर में क्या है, ओपन डोर्स फॉर चाइना एज चाइना कीप्स इट्स डोर्स फर्मली शट। ये चाहता है कि एवरीवन ओपन्स हिज डोर्स, उसका दरवाजा खोले। मैं इंडिया दरवाजा खोले, जर्मनी दरवाजा खोले, यूएसए दरवाजा खोले, पर चाइना अपना दरवाजा बंद करेगा उनके लिए। यही तो प्रॉब्लम है। यही कहानी है इंडिया के साथ भी। और वो अगला इसमें बताऊंगा इंडिया का क्या साथ क्या प्रॉब्लम है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी हम आते हैं स्टेट फाइनेंशियल सेक्टर में। अगर आपका पूरा इकोनॉमी ठीक होना है तो आपका फाइनेंस सेक्टर बढ़ना चाहिए। अनलेस योर फाइनेंस सेक्टर ग्रोस, दैट्स द फंडामेंटल फॉर योर इकोनॉमी, you can't go. So this article 1 month back, it says China's state financial sector braces for one of the toughest years. 1 month back, he's done all these actions. Xi Jinping initiated a plan which is to fight corruption and bring this sector under direct control of the Communist Party. So first and foremost, the entire finances of China is going under him. And he's created uncertainty. How is he created uncertainty? By relentless ideological and anti-corruption drives and sharp pay cuts in the range of 15 to 20% of basic salaries, with annual bonuses set to be slashed by another 30%. So the complete financial sector was to take haircuts. कौन काम करेगा? और तो और, all these pay cuts were aimed at common prosperity to narrow the wealth gap. So all people who are running the finances started going helter skelter. He also caught hold of a few guys and purged them. उनका अता पता नहीं है. People who had proven track records have gone out due to corruption, or supposed to be. वही हाल होगा जो इसका फाइनेंस मिनिस्टर का है. And of course, there is a huge local government debt, and their financial institutions are getting weaker because of all this. Last line. Ideological training has become a priority in the overhaul. This overhaul is now already 1 month old. Right? Education campaign was the top priority and sessions could not be skipped. So the financial sector has been scrubbed, the educational sector has been scrubbed, the technology sector has been scrubbed, the property is in a sector is in a problem. Your imports are not going, your exports are not going. What is going? And what are these 31 steps where you say, I'll use private people and I'll help private people? We don't know. Well, it'll come out. I'll do an analysis then again. But if you see the whole thing, if you think that it can be done, well and good. All the best to China. Okay. Evergrande is going from one problem to the other. And with the Evergrande, houses are going down. House markets are down. The prices are only going down. Yesterday I heard one video. उस वीडियो में बताया गया है कि जो पहले 40,000 या जो भी है यूएन है, आजकल वो 25,000 में जा रहा है घर. So 15 out of 40, almost 30% off. Market prices are down. And this is where all the Chinese have kept their savings. Now he's trying to revive this sector by giving lesser mortgages. The details will come. So if this sector goes, then the control goes. Revival of private sector means control, which he is not doing. He wants to educate the private sector also.
So he wants to have it both ways: eat the cake and not have it too. Typically, now there's this geopolitical economy. There's a problem. What is the paradox? Where China has influence, it has no markets. Africa, South Asia, no one can buy what China is offering. And if they buy, they'll buy cheap stuff. Where China has markets, it has no influence anymore. EU and Germany are virtually saying thank you. They're looking into a de-risking. If you see the de-risking document which has come out from Germany, it's very clear that they're going to shave off imports from uh, China. And in any case, with the Ukraine war there, it'll automatically happen. Exports to USA have dropped by about 20 odd percent already. So where are their exports going? See, the geopolitical tensions pit China against the global north. The global south is indebted to China. Most of these people are in BRI, they are all in the debt trap and they can't repay. So you can't sell, you can't repay, your money is stuck and कोई भी बताएगा इकोनॉमी में अगर पैसा मूव नहीं करता है तो वो टप हो जाता है money has to circulate. That circulation has been stopped. Then everyone talks of decoupling, relocation, friendshoring. It's all going on, de-risking. It's happening. There's no stop. So jobs are going down. And of course, there's international inflation and reduced buying capacity. So आप किसी तरीके से देखो तो ये रिवाइवल बड़ा मुश्किल है with the kind of team which Xi Jinping has, right? Because people are going to say, why am I putting this video out in such a fast clip? People are going to say, oh, will do everything. It will come out with a great plan. China has come out with so many great plans, they've all gone useless. Let's take this step by step so you understand the whole thing, right? Okay, in the first thing, he started common prosperity, which will lead to state control, state control meant his targeted educational tech and financial technology companies and finished them off. It resulted in no jobs, pay cuts, huge. So no consumption. It's happened. No, you can't revive because all these Alibaba, Tencent, they're all in losses. There's no international confidence in them. Their stocks are down. Right. Okay. Then you look at the property bubble. What did the property bubble start? That's the second layer. Property bubble had unfinished projects, unsold inventory, which is lying vacant still. China has more houses than it needs ever. Even if it doesn't build a house for the next 10 years, it doesn't matter. But they want to build more. It's all dead GDP. Home prices are down by 30%, which means there's no demand. If there's no demand, the other reason is there's household debt because there are no pay cuts are there. The debts which they have taken, they can't repay. And there's a mortgage crisis. So all this has happened. Now, there's an infrastructure overcapacity, whether you talk of roads or high-speed rails or canals or whatever. All their high-speed rails are running at 15 to 20% capacity and massive losses. And they want to make roads more. All their cities are trying to make more infrastructure. What's interesting, Xi Jinping is trying to make new cities. Some of them are after his name, one next to Beijing, and no one wants to go there. So all this new infrastructure is dead investment. Okay, and the local governments are up to their neck in debt and they are not able to repay because there's no return on income. And maximum income of the local governments was land sale or land right sale to property developers who could build property. But the property developers are not buying land anymore, so they don't have money. Right? It again goes back to the same thing. Household debt and mortgage crisis continues. Okay, third,
There's this demographic factor of aging and declining. Today, there's an article in South China Morning Post which says double income, no kids is the latest trend. एवरी डे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक ना एक आर्टिकल आता है जिसमें ये बोलते हैं या चाइना में बच्चे नहीं है, या बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, या शादी नहीं होता है, या शादी नहीं करना चाहते हैं, लड़कियां नहीं है, या लोग बुजुर्ग हो रहे हैं और इन जब ये बुजुर्ग हो जाते हैं इनके पास हेल्थ के लिए कुछ है ही नहीं, सोशल सेक्टर नहीं है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैं बार बार बताता रहता हूँ, 10 साल पहले शुरू हुआ था, अब बाहर उभर के आ रहा है। आज तक इन्होंने झूठ बोलते रहे और छुपाते रहे। बहुत लोग इंडिया में भी ये बोलते हैं नहीं नहीं यार ये हो जाएगा, ये हो कैसे जाएगा? अर्थव्यवस्था का लोगों को होता है, गाय बकरियों का नहीं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो योर इंश्योरेंस एंड सोशल सर्विस बेनिफिट्स आर डाउन, राइट? Raising children is very costly in China because education and everything is costly. And then ever since 2010 2010 से लेकर आज तक इनका वर्किंग फोर्स रिड्यूस वर्कफोर्स एंड रिड्यूस वर्किंग पॉपुलेशन हो रहा है। इट्स रिड्यूस्ड। अगर पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया तो दे हैव रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, एंड दिस रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी हैज अदर स्पिन ऑफ्स। Wages have gone up, availability has gone down. But despite all this, there's a huge unemployment crisis, which I spoke of. If you're over 35, you don't get a job. If you're a new graduate, you don't get a job. If you're a migrant, you don't get a job. Who's getting jobs? And why is that happening? And that is happening because of Ukraine war. Ukraine war, global inflation, there's no demand, no exports. So manufacturing is down. Exports means no imports either. Overall manufacturing is down. If there's manufacturing down, there are pay cuts, no jobs, factory closures, which means no consumption, which means again no demand, and which means productivity is overall reduced. Now, over and above all this, there is this issue of climate change and food security, which I've been speaking of. Everyone says climate change, climate change, climate change is for everyone. I agree it's for everyone, but for China, it's affecting them. Last year it was drought. This year it is so much rain that their wheat crop has gone, and their hope कि अगला crop भी इनका फसल भी प्रॉब्लम होगा क्लाइमेट की चेंज की वजह से। या बाढ़ आता है एक्सट्रीम, या गर्मी हो रहा है जो पहले नहीं होता था। हमारे भी हो रहा है। हमारे गवर्नमेंट ने राइस एक्सपोर्ट बंद कर दिया, चावल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, उत्पन्न उतना नहीं है, तो एक्सपोर्ट बंद कर दिया। पर हमारे लिए तो सही है, बहुत है। इंडिया में खाने के लिए अनाज है, खुद बनाते, उनके पास प्रॉब्लम नहीं वो, क्योंकि डाउन है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कल के दिन कोई लड़ाई छिड़ गया, मलक्का स्टेट बंद हो गया, तो इनका खत्म। ये प्रॉब्लम है इनका। आखिर you look at it, the 3 points on the left, there's a lack of trust. People have lost trust in China. चाइना के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया सब लोगों ने, कोई करना नहीं चाहता। क्यों? ये झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। और एक चीज नया उभर के आ रहा है कि ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, हम जो सोचते थे बड़ा कॉम्पिटेंट है, वो आजकल इनकॉम्पिटेंट है। एक जमाने में था, सोचते थे कि भाई ये मेरिटोक्रेसी के ऊपर चलता है। टुडे इट इज नॉट रनिंग ऑन मेरिटोक्रेसी। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज अ ह्यूजली इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। Xi Jinping is an out and out politician who's got no clue about economics. All his economic theories have gone down the drain. And one more thing which I have not included in this, that in the past 10 years, Xi Jinping has flipped 4 times. 3 times I've outlined, now the 4th time. Anyone who flips 4 times
is zigzagging. If he had been in Pakistan, he would have been a good competitor for U-turn Khan. That's how it is. So what is it? There's a crisis in perpetuity. Okay. Now let me put this in pictures. In the beginning, it was assumed that Xi Jinping will follow Deng Xiaoping's footsteps. That's what this cartoon was all about. बाद में everyone said no. He eschewed Deng Xiaoping and shook hands with Mao. That's what the middle picture says. Now he is back to the last one. आके रहना चाहता है यहाँ. पर इससे भी एक प्रॉब्लम है. Forget all this. He wants to be higher than all of them. He wants to be known as the greatest leader in the Chinese history. He will do whatever it takes for that. And that is his undoing. I'll get back on with more analysis about all this. Till then, I'll look forward to your feedback. Thank you and Jai Hind.